जनरली एज अ टीचर आपको पता चल जाता है कि ये कैंडिडेट्स शायद आउट परफॉर्म कर सकते हैं, not because of their background, because of their intensity, because of their approach. If I talk about my 10th marks, I was a COVID batch student. So scored 96%. For the roadmap for CFA, I used to hate note making, but this course actually taught me to how to make notes, how to make very efficient notes to study. My father is a businessman, my mother is a homemaker. So no one in our family is really into job or something or any professional course. So I'm the first one in the family technically to do something like CFA or any other professional course. Hello my dear CFA candidates. CFA level 1 2024 नवंबर के रिजल्ट्स बहुत रिसेंटली आए. रिजल्ट्स 43% थे. हमारे रिजल्ट्स बहुत जोरदार आए. God has been really kind to us. We have one of our candidates with us. Her name is Manya Nayyar. मैं इनसे जब पहली बार मिला था, I was very confident that she would crack this exam wide open. She would comfortably crack 90 percentile and that's how the results were. Generally, as a teacher आपको पता चल जाता है कि ये candidates शायद आउट परफॉर्म कर सकते हैं, not because of their background, because of their intensity, because of their approach. On the very first day itself, when I started working with her, I could see that her questions were very pinpointed. I could see that she was very focused. Long term में focus transpires to get good results, and that is how the results were in her case. With this, I will let Manya ji speak. I'll request her to give a brief background about herself, अपना अंडर ग्रेजुएशन 10th 12th फैमिली बैकग्राउंड ये सब कुछ बताइए, so that the audience and the viewers can understand what sort of student you were before you actually did CFA level 1. Please ma'am. Like I'm right now in the second year of my college pursuing BCom honors from Jesus and Mary College. And if I talk about my 10th marks, I was a COVID batch student, so scored 96%, didn't give board but had results from the back's hand. Scored 96%. In the 12th I had commerce with maths and scored 95%. And if I talk about my family background, my father is a businessman, my mother is a homemaker. So no one in our family is really into job or something or any professional course. So I'm the first one in the family technically to do something like CFA or any of the professional course. But the results have been good. 95-96% is very good. Kudos for that. But how did you reach the conclusion to do CFA? कैसे plan बना कि CFA करते हैं? So initially I had a plan to do some other course or some other like government exam something, but one of our family friends suggested that you have an interest in finance accounting and his son was doing it, so he suggested me to pursue CFA and he was doing from the Wall Street School, so there was a trust thing ki yeah, he has cleared it, the faculty would be good, so I could go for the Wall Street rather than finding any other institute in Delhi or out of Delhi. And you also pointed out that you are in your second year. तो आपने CFA की प्रिपरेशन लेवल 1 की प्रिपरेशन आपने while being in your first year ही start कर दिया. Yeah. Okay. And how difficult was it to prepare for CFA level 1 along with your undergraduation? Yeah, what was the transition? Struggles क्या थे? It was a lot for me to be honest in initial days because coming from school 12th you don't really have to study that much to the extent when you have the undergraduation thing as well as a course something like this. So initially it was, but then gradually it grew on me. I knew how to do things because in 12th you don't really know how to sit professionally, do a professional course or something like that. So it was a hard thing for me in initial days, but gradually it grew on me and I got habitual to it. So I'm 100% sure कि कुछ स्टूडेंट्स देख के बोल रहे होंगे कि ऐसे ही होते हैं टॉपर्स. ये नालायक पहले बोलेंगे हमारे 95% आए 10th और 12th में, फिर कह रहे हैं पढ़ने की आदत थोड़ी ना थी, मतलब पहले थोड़ी ना पढ़ने आ रहा था या पहले तो उतना पढ़ ही नहीं रहे थे. नहीं, बट आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट शी इज ट्राइंग टू से. सो व्हाट हैपेंस इज दैट जब आप क्लास 12th में होते हैं तो आपका ना एक महीने में CBSE 5 एग्जाम्स लेता है. ICSE IB दूसरे बोर्ड्स भी कुछ इसी तरीके से करते हैं, बट प्रैक्टिकली यू हैव अ मंथ्स विंडो टू अपीयर फॉर 5 एग्जाम्स. सो प्रैक्टिकली आप हर सब्जेक्ट के लिए 5 से 6 दिन का रिवीजन कर पाते हो. अंडर ग्रेजुएशन भी बहुत सिमिलर लाइंस पे ही चलता है, शायद यहाँ पे एक महीने में 8-10 एग्जाम हो जाएंगे. बट once you enter into a CFA like domain, over here you have to appear for 10 subjects in one single day. So the level of proficiency that is required, the level of expertise, the level of revisions that is required, it is a different task. It is a monumental game if you compare it to 10th and 12th. So I can completely understand it. I just clarified it because मुझे 100% पता है कोई देख के बोलेगा कि 95% आ रहे थे और कैरी की पढ़ाई भी कर रही थी, तो ऐसा नहीं है. वो
वो पहले रिक्वायरमेंट या पढ़ने की दरकार ही 4 घंटे की 3 घंटे की थी, दिन में बहुत होता था, अब शायद उतने से काम नहीं चलेगा लेवल 1 में, है ना? ठीक है, दिस वॉज गुड। आप मुझे एक बात बताओ, सीएफए में क्या स्केलेटन था, मतलब सीएफए में रोड मैप या प्लानिंग क्या थी, कितने महीने प्रिपरेशन किया, कैसे एक सब्जेक्ट को पैक करते थे, कितने प्रीमियम पैक के क्वेश्चंस किए, कितने मॉक्स दिए, अपनी ओवरऑल प्रिपरेशन डिटेल में बताइए। मे बी टेक 5-10 minutes टू गाइड द future candidates about how to plan this exam. So basically, I joined the classes in November 2023 and had my exam in November 2024. So took a one whole year because I felt that take your time to do things rather than hurrying up so that you just have to give it second or third time. एक ही बार तैयारी करके अच्छे से clear करो. Okay. So for the roadmap for CFA, I had like 4 things in my mind. I used to hate note making. Okay. But this course actually taught me to make how to make notes, how to make very efficient notes to study. So initially classes, then had to notes. Don't skip on notes because that is on the final day. Those are your saviors. Notes, then complete that particular reading or complete that particular topic from the Schwezer notes, and then the C book questions, the blue box and the backhand questions, and then come back again to the notes just to write some pointers jo miss ho gaye maybe, and just revise it. So that's how I used to like complete a particular reading. Okay. And then for particular reading, and then give a whole revision to all those readings and pack a subject at last. Correct. So the way you would pack a subject is, step 1 is class videos and make notes simultaneously. Step 2 is Schwezer का complete read. Yeah. Step 3 is CFA Institute की बुक में से सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करने. Yeah. ब्लू बॉक्स क्वेश्चंस मतलब एग्जांपल्स भी, और एंड ऑफ Back करिकुलम end मतलब questions. अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस भी. Yeah. और स्टेप 4 है वापस रिवीजन Revision पूरा का notes पूरा का. कर लेना. ओके, ग्रेट. इसके सिवा और कुछ? No, I didn't refer to anything else. Those were like my 4 main steps for doing each reading, each subject. ऐसे ही Nothing रीडिंग apart. 1, ऐसे ही रीडिंग 2, सारी रीडिंग्स हो गई, इसी तरीके से सब्जेक्ट पैक हो गए. Yeah. ओके, ग्रेट. कब तक के पूरे 10 सब्जेक्ट्स कर लिए थे? I finished 10 of the subjects till mid of September and then gave time to revisions because as एक दिन में as said 10 subjects की knowledge रखना is a very tedious task. So revision was very much important. And at a point I forgot कि मैंने कितने revisions कर लिए हैं. It was somewhere around 7 to 8 definitely. And initially it took me like more days to revise a particular subject, but धीरे धीरे it started to like एक go दिन में in. कितना घंटे पढ़ रहे थे? I like was very consistent from the start. So I used to give every day. It was 6 to 8 hours. 6 hours, 7 7 hours, hours like तो he- 7 hours की एवरेज, 6 to 8 तो 7 की 7. एवरेज. Yeah. स्टार्ट ऑफ द प्रिपरेशन से मोटा मोटा इतना एफर्ट्स चल रहे थे, बीच में कभी लैक्स नहीं हुआ, कुछ गलतियां नहीं Sometimes it was like some days were like when you were not really feeling like you study or something like that. But still उस दिन भी it was nothing less than 4 hours. की? ओके, And बाकी अगर किसी दिन बहुत high on energy हो तो 10 till 12 hours हो जाते थे उस दिन. ओके, बहुत बढ़िया. और उसके बाद जब 15 सितंबर तक आपने बताया कोर्स कंप्लीट हो गया, तो फर्स्ट रिवीजन में कितने दिन लगे? First revision for all subject it took me around 25 to 30 days. तो मिड अक्टूबर तक के अपना First revision was done. और सेकंड रिवीजन? Then उसके बाद it took me like initially I took single subject, but then I started doing 2 subjects simultaneously. So it took me around 15 to 16 days to do that. ठीक है, और उसके साथ टाइम गिरता गया. Yeah. रिवीजन, Revisions का फाइनल time. रिवीजन कितने दिन में, मतलब अगर जब फाइनल रिवीजन किया था तब पूरे ऑल 10 सब्जेक्ट्स कितनी देर में कर लिए? The night before the exam on like 16th and 17th, I was due 3 revisions of that. I had a particular folder. Okay. My thing was that if you ever want to add something, just tear a page, add that and add it in the folder. Okay. So that folder at the end days was my everything, Schwezer, C-book, everything. It was just a copy for me. Okay. So just read that particular folder 3 times before my exam. लास्ट 2 डेज? Yeah. तो लास्ट 2 दिन में आपने 3 रिवीजन्स कर पाए थे अपने नोट्स के. Yeah. ये कोई जूस नोट्स नहीं है, ये कोई सीक्रेट सॉस नहीं है जो It इधर-उधर was made wholly by me. पूरे के पूरे सेल्फ नोट्स. इसमें Yeah. 100% कोर्स है. 100%. Like if someone would read this, they'll will know that ये पूरी Schwezer and C-book की कॉपी थी पूरी. तो ये 100% नोट्स आप लास्ट 2 दिन में 3 दफा कर पाए थे. Yeah. फ्रॉम स्टार्टिंग, मतलब पहली बार जब रिवीजन किया था तो 25 डेज लगे थे, 30 डेज लगे थे, और आखिरी रिवीजन में प्रैक्टिकली हाफ अ डे में ही हो गया. Half a day, yeah. तो 25 डेज टू हाफ अ डेज का ड्रॉप आ जाता है. Yeah. Now let's revisit what she said. She said I prepared almost for a year, studied for 4 to 7 hours daily.
ओवरऑल मिला के मेरे ख्याल से 700-800 घंटे के आसपास हो गया होगा। टोटल नंबर ऑफ रिविजन्स कितने किए थे? 7 to 8, बट उसके बाद काउंट भूल गई थी मैं एक हाँ, पॉइंट पे। तो अराउंड 7 रिविजन्स मिनिमम। प्रीमियम पैक और प्रीमियम मॉक्स के स्कोर्स बताओगे मैम? Premium packs and premium mocks I did 3 times. Premium packs was done by me 2 times, and initially the first time I had premium packs में score around 75 to 80, and for the mocks I had a score between 80 to 84. तो अराउंड 80% का स्कोर आ रहा है। अब एक बार ये सब चीजें सोच के देखिए, इज इट रियली पॉसिबल दैट सच अ कैंडिडेट गोज टू द एग्जाम एंड डजंट क्लियर द एग्जाम? इट्स नॉट पॉसिबल। इनफैक्ट देयर इज नो चांस इन दिस वर्ल्ड की इस कैंडिडेट के 90 परसेंटाइल ना क्रॉस हो। दिस इज द फाइनेस्ट लेवल ऑफ प्रिपरेशन दैट कैन बी डन। एंड शायद यही चीज ऑब्जर्व कर ली थी मैंने थोड़ा सा जल्दी। आई एम नॉट ट्राइंग टू से दैट आई एम अ सूटसेयर और एनीथिंग, बट वो ऑब्जर्व हो जाती है। ग्रेट ग्रेट प्रिपरेशन। एनी मिस्टेक्स दैट यू डिड ऑन योर जर्नी? Any mistakes? I would say initially I was more inclined, like I said, note making वाली चीज। I was thinking कि मैं श्वेजा से ही मार्क कर लूंगी, and at the end of the day I would be like skimping on the श्वेजा की books. But then when 2-3 subjects happened, I realized नहीं होगा, have to make notes. So I had a bit of extra time indulged in that note making. That was one of the mistakes I would say I did. But उसके अलावा I don't really think. बाकी maybe I did, but at the end God was like, yeah, you can do it. So I did. So one major advice to students will be कि notes बहुत अच्छे बनाने Notes चाहिए। should be like perfect, because that is the thing at the end of the day, वही काम आएंगे। श्वेजा सी बुक एंड डे पे आप नहीं देख सकते, because it's very tense thing next year of exam. You can't do it. एथिक्स को कैसे प्रिपेयर किया था मैम? Ethics I did entirely from C book. Like read each and every line of that particular reading, everything, made notes as usual. हर एक line whatever I felt is important, Okay. what I think could be tested, just wrote it in the notes and then practice some questions from the C book and the Shweza. That's it. एग्जाम में कितने सब्जेक्ट्स में मोर देन 70% आए? In around, I would say 8 to 8 9. सब्जेक्ट्स में? I just got a bit below the expectation in one subject. Then I had Which subject? it was economics. Which, इकोनॉमिक्स में स्कोर आपका 70 से कम है? yeah, बाकी सब सब्जेक्ट में 70 क्रॉस 70 crossed है. और ओवरऑल 90 क्रॉस है। Yeah. Okay, amazing, amazing. Any other tip or any other advice that I've missed on giving to the candidates, but you would like to still tell the students? One thing that I learned is that you have to be very consistent with the preparation. You can't just be like end day पे कर लेंगे, end day पे कर लेंगे, end day पे actually कुछ नहीं होता. The preparation that I had like for 4 to 8 hours, still at the end of the day I was feeling कि this मेरे से नहीं होगा. तो that is something that towards the end you always have that feeling that you won't be able to do it. So end के लिए कुछ नहीं छोड़ना. Note making should be your like best friend thing, and be consistent. That's it. Okay, okay. Wonderful advice. I think she has pretty comprehensively told us how to prepare. This is good. एक लास्ट पर्सनल क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। अगले प्लान्स क्या हैं? जॉब करनी है, CFA लेवल 2 देना है, GMAT, GRE, MBA, बहुत सारी चीजें। इनफैक्ट अभी तो आप सेकेंड Second ईयर year में में हो, तो अगला प्लान तो मेरे ख्याल से सेकेंड ईयर का एग्जाम और थर्ड ईयर के एग्जाम लिखने का होगा। उसके साथ से CFA level 2 for sure. ओके, कब लिख रहे हैं CFA लेवल 2? I am planning in November this year, ओके, or if like everything goes right, then definitely November, or if I had to, then definitely I have to go for May. ओके। तो अगर इसी साल लिख रहे हो नवंबर, मतलब आप यू वुड हैव गिवन योर सेकेंड ईयर एग्जाम्स बाय देन? Yeah, मतलब आप उस समय थर्ड ईयर में होगे। yeah. तो गॉड विलिंग इफ एवरीथिंग गोज एज पर प्लान, देन बीइंग व्हेन यू वुड क्लियर योर अंडर ग्रेजुएशन, यू वुड हैव कंप्लीटेड योर 2 लेवल्स ऑफ CFA। कॉलेज में प्लेसमेंट्स वगैरह के लिए कब आती हैं कंपनीज? In the month of March and Feb, somewhere around them. तो अगले साल। Yeah. तो बिफोर सिटिंग फॉर द प्लेसमेंट आपके 2 लेवल ऑफ अंडर ग्रेजुएशन होंगे। Yeah. तो डेफिनेटली वेरी वेरी बिग बूस्ट टू योर CV देन। और मतलब क्लास में स्टूडेंट्स जनरली या तो सिर्फ अंडर ग्रेजुएशन में होंगे, या हो सकता है कुछ लोग जो प्रोफेशनल कोर्सेज परस्यू कर रहे हैं, कुछ लोग CA वगैरह कर रहे होंगे, बट दिस इज इक्विवेलेंट, वेरी मच इक्विवेलेंट। Yeah. वंडरफुल। और इसके बाद क्या प्लान है? एनी वेग आइडिया या नहीं? अभी Then उतना सोचा really नहीं है? नहीं, इतना नहीं, अभी CFA level 2 तक सोचा है. One step at a time. ओके, वंडरफुल वंडरफुल। दैट्स हाउ द थिंग शुड बी डन। तो धोनी साहब कहते हैं ना कि प्रोसेसेस पे ध्यान दो, वही कह रही है मैम भी, कि अभी वन स्टेप एट अ टाइम। अभी का पता है, आगे का नहीं पता। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड आंसर,
People ask me as well कि सर लॉन्ग टर्म में क्या प्लान है आपका, एंड आई एम लाइक मुझे इतनी दूर का दिखता ही नहीं है. somehow I just think about the next 2 3 6 months, क्योंकि उतना ही फोर्सिएबल है मेरे लिए. प्रोजेक्शन तो नहीं बना रहे कंपनी के कि 4 साल की प्रोजेक्शन कर पाए, है ना. Done. Great. Anything that you think I have missed out on, you can have a word with our students. Yeah, so not really. बाकी सब बता दिया. बाकी all the best to everyone who thinks of planning to go for CFA. हो जाएगा. Just be consistent, be disciplined, and please note making पे please skip मत करना. That's it. Thank you. So hopefully, once she has cleared her level 2 exams, we'll have a podcast with her again.